Hello students, welcome to the maths class. In today's session, I'm going to discuss some of the questions related to the topic that we were discussing, that is square roots. Now, I'm going to take a question from exercise 3.3, the last question that was left to discuss, and a question I'm going to take from next exercise, that is 3.4, because I'm directly taking the question of exercise 3.4 because there is no such any new concept related to that exercise. That exercise is basically based on the word problems only of the topic that we were already aware of, that is the square roots only. So let us start firstly with the question from exercise 3.3. Question number 5, part 1. Here the question says, find the smallest whole number with which given number should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root. Now what the question says is, the number you have been given is 252. This number they are saying that this is not a perfect square. Now you have to find out a number which when multiplied by 252 gives a perfect square number, and after you get the perfect square number you have to take out the square root of that number. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन में ये नंबर दिया है 252, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो ऐसा नंबर निकालिए, जो ऐसा स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर निकालिए जिसको जब 252 से मल्टीप्लाई करे तो जो नंबर मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और जब वो नंबर मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर वाला तो उसका स्क्वायर रूट निकाल कर उसकी वैल्यू बतानी है. नाउ स्टार्टिंग द सॉल्यूशन. First of all, I am going to take out that smallest number which when multiplied by 252 gives a perfect square number. In order to take out that number, I am going to prime factorize this 252. So I have taken out the factors, that is 2, 2, 3, 3, 7. So the factors of this number 252 is 2 into 2 into 3 into 7. Now, what you have to see is, in case of the factors of 252, you can see there is a pair of 2, again there is a pair of 3, one pair of 2 is there, one pair of 3 is there, but there is no pair of 7 here. Only one 7 is there, there isn't any pair of 7. Okay, 7 is left alone. What you have to look, among the factors, the number which is unpaired, which do not have any pair, that is the smallest number which when multiplied by the given number gives a perfect square number. I am explaining it again. जब फैक्टर्स हमें 252 के निकाल दिए, जो कि हमें 2 into 2 into 3 into 3 into 7 मिले हैं. इन फैक्टर्स पे अगर ध्यान देंगे तो 2 का एक पेयर मिला है, 3 का भी एक पेयर मिला है, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं मिला. 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड. सो वो नंबर जिसका कोई पेयर नहीं मिलता है, वो नंबर जब इस गिवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर देता है वो परफेक्ट स्क्वायर देता है. इसका मतलब जो ये क्वेश्चन था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विथ विच गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया? 7 आ गया. ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको अगर 252 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो हमें देगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. यानी इसने 252 से मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यू मिली हमें वो मिली है 1764, which is a perfect square number. Now, what next is to be done? Also find the square root. अब इस perfect square number का square root हम निकालेंगे. So prime factorization method यूज करेंगे square root निकालने का, क्योंकि बेसिकली यही मेथड यूज किया जाता है. जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड हमने पढ़ा है वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए मोस्टली उसको अवॉइड करते हैं. Prime factorization method use किया. I took out the prime factors of this number. I did the prime factorization and I got the factors. I hope you all are now clear how to take out the prime factorization. So I am not telling it again and again. Simply I am reading the factors, that is 2, 2, 3, 3, 7, 7. Now before I go on, you can compare these two. Here you are getting one pair of 2, one pair of 3 and no pair of 7. But see the difference? Here you are getting pair of each and every factor. Now, moving on. I got the factors as 2, 2, 3, 3, 7, 7. I wrote the factors in under root. Now I take out one factor from each pair. One pair of 2 is there, so I took out 1, 2 from this. One pair of 3 is there, I took out 1, 3 from this. One pair of 7 is there, I took out 1,
7 from this. So finally I find out the product of the value of this. 2 into 3, 6, 6 sevens are 42. So I got the answer as 42, which is the square root of 1764. So the answer of this question is, the smallest number which was asked to find out is 7, because when 7 is multiplied by the given number, that is 252, it gives a perfect square number which is 1764. Now the next answer is the answer of the next part of the question, that is square root, is 42. When I took out the square root of this perfect square number 1764, I got the square root value as 42, which means square root, you know what is this. If you multiply 42, if you take out the square root of 42, you will get 1764. Simply the 42 is the square root value of this number. I hope the solution of this question is now clear to you all. Moving on, in exercise 3.4, there is no such new concept, only some word problems is there related to the same concept, that is square root. There are different methods of taking out the square root. So we will discuss questions only in this exercise. First of all, I took the question number 1 from the exercise 3.4. Now the question says, find the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. Here what the question says is, वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर निकालिए, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालिए जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाता हो, विच इज डिविजिबल बाय 6, 9 and 15, 3 of them. So सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना जो कि इन तीनों से डिविजिबल होता हो. So सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो फैक्टर्स दिए जिससे कहा जा रहा है कि ये नंबर जो निकालेंगे ये डिवाइड हो जाए, इन तीनों का एलसीएम निकालें. एलसीएम को निकालना आता होगा. 6, 9 और 15 का हमने एलसीएम निकाला. सो 3 से गया, फिर 3 से गया. आई एम रीडिंग आउट द फैक्टर्स नाउ. फाइनली 3 into 3 into 2 into 5. You can see I'm getting a pair of 3 here. 3 into 3. Now unpaired numbers are 2 and 5. And I got the LCM value as 90. Multiplying all these factors, I got as 90. Now, focus on this theory part, what I have written. Now, the factors 2 and 5 are not in pair. So, in order to make a perfect square, every number should be in pair. Hence, one more 2 and 5 is required. Now, they were saying find out the smallest square number. सबसे छोटा स्क्वायर नंबर हमें फाइंड करना है. तो हम क्या फोकस करते हैं, हम क्या नोटिस करते हैं कि जो एलसीएम की वैल्यू मिली है, जो हमें फैक्टर्स मिले हैं, उसमें कौन कौन से नंबर्स अनपेयर्ड हैं. सो हम देख रहे हैं 3 पेयर्ड है, लेकिन 2 और 5 अनपेयर्ड है. अगर यहाँ पर एक और 2 होता या फिर और एक और 5 भी होता, या फिर नहीं और एक और 5 भी होता, तो ये दोनों भी पेयर्ड हो जाते. सो इसी की कमी है, इतने की कमी है. ठीक, इतने की कमी है इस नंबर को 90 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए. 90 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है अभी तक. अगर इसमें इतने नंबर्स और एडअप हो जाते तो हमें 90 परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता. So that means in order to make this number 90 as a perfect square number, in order to find out the smallest square number which is divisible by 6, 9 and 15, we have to multiply one more 2 and one more 5 in the given factors. So I am taking one more 2 and one more 5. Multiplication of one more 2 and 5 gives out 2 into 5 10. मतलब 10 को और मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर इसमें, सो हमें जो नंबर मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. क्यों 10? क्योंकि एक 2 और एक 5 की कमी. तो एक 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर और करते तो सब पेयर्ड हो जाता. सो मैंने 2 into 5 निकाला, 10 आ गया. इसका मतलब 90 में अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, और वो नंबर इन तीनों से डिविजिबल होगा एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन. So 2 into 5 is equal to 10. I multiplied this 10 with the LCM value of 6, 9, 15, that is 90. I multiplied 90 with 10. I got the answer as 900. और ये जो 900 है ये वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 6, 9 और 15 तीनों से डिविजिबल होता है. So I hope it's clear now. We will discuss some more questions, some more word problems in the next session. This was I think enough for today. Try to solve more and more questions related to the concepts of these 2 questions, and if in case you face any problem, let me know about it. Thank you.